We are live now, so we can start. Okay. Good morning and welcome everyone to another edition of our webinars in the series Illness to Wellness. We've been organizing these webinars since past 2 years, and these webinars are dedicated to you, our audience, towards your health, towards better outcomes of your health. And there's a lot of misinformation floating around on the social media, and this is also an endeavor to bring out the right information, as you can see, from a few of the best specialists, not only from our country but from all over the world, who've been kind enough to be as faculty and panelists in these webinars, and they have been answering your question on different aspects of health and wellness, ranging from nutrition, immune system, COVID, diabetes, uh, neurological diseases. And today we are going to touch up on a very, very important disease, that is the Alzheimer's disease. Today is also World Alzheimer's Day, so it's very befitting that on this day we are going to discuss Alzheimer's disease, and since it is related to aging and to old age, because generally it is seen only in the aging population, so we are going to discuss topics related to aging as well. So once again, I'm very thankful to all of you, to our viewers, and to our esteemed guests and faculty who have been so kind enough to find time from their so busy schedule and join us. So welcome once again. And to set the ball rolling, to start the session, I would request and I would invite Shri Anil Rajputji, who is the chairman of AFSCR, of ASSOCHAM, who has been instrumental in organizing these health and wellness initiatives. Even before the webinars, camps, preventive healthcare camps have been organized through his initiative, and thousands of people have benefited from them. So we can see him right there. Welcome, sir. Good morning. And the mic is over to you. Thank you very Anil much. Rajputji. Yes, sir. Thank you very much, Dr. Yasri. It's a great honor for me to welcome Professor M.B. Padma Srivastava, Head of Department Neurology, Chief Neurosciences Center, AIMS, Professor Rajendra K. Damija, Director, Institute of Human Behavior and Allied Sciences, Dr. Shamsher Dwivedi, Chairman, Department of Neurosciences, Medeor Hospital, Ulchand Hospital. Dr. Ritu Rana, Mission Head of Healthcare, Health Helpage India, and Dr. Rajesh Kesri, who has been my associate for so many years in Illness to Wellness program. And good afternoon and warm welcome to all the participants who have joined us this morning on Prosperous Old Age webinar organized on World Alzheimer Day by ASSOCHAM under its Illness to Wellness campaign. World Alzheimer Day is observed every year today. This is on September 21st to create and spread awareness regarding this disease. It is a perfect opportunity to share experiences and find new ways to fight the effects of this old age ailment. The Alzheimer disease international responsible for supporting people and conducting outreach to educate people in 1994 introduced World Alzheimer Day in Edinburgh during their annual conference on September 21st to mark the 10th anniversary. The disease, which we now know
as Alzheimer is named after German physician Dr. Alzheimer, when in 1906 he first described a peculiar disease, one of profound memory loss and microscopic brain changes. Just like the rest of our bodies, our brains also change as we age. Most of us eventually notice some slow thinking and occasional problems with remembering certain things. However, serious memory loss, confusion, and other major changes in the way our mind works may be a sign that brain cells are failing. Alzheimer's disease is the most common form of dementia. It is a progressive brain disease which results in loss of memory and other cognitive abilities, serious enough to interfere with daily life. While in early stages of memory loss is mild, in later stages, advances through the brain, it leads to increasingly severe symptoms, including disorientation, mood and behavioral changes, confusion about events, time, and place, unfounded suspicions about family, friends, and professional caregivers, more serious memory loss, and difficulty speaking, swallowing, and walking. Worldwide, at least 50 million people are believed to be living with Alzheimer's disease, and experts suggest that this could exceed 152 million by 2050. In India, according to the Dementia in India report 2020, the number of people affected by disease is around 5 million, and this figure is set to rise to 7.6 million by 2030. Medical practitioners also indicate that India's burden would be much higher than the global burden of disease, as the problem is largely underreported in the country. In addition to this, we also lack large population-based dementia registries or studies, which makes it difficult to obtain accurate estimates of the burden or its projection. Medical science does not yet definitive answer as to what causes Alzheimer's, but it is understood that it is a combination of genetic and environmental factors that mostly afflicts the elderly. Since Alzheimer is a common among seniors and the probability of disease increases with age, especially above 60 years, it is absolutely necessary that elders have a basic awareness of the disease, know about its early symptoms, see what can be done to take preemptive steps to prevent and understand other associated issues. While Alzheimer has no cure, early diagnosis and intervention methods are improving dramatically, and treatment options and sources of support can improve quality of life. Caregiving for such patients also becomes extremely important. Sensitive caregivers who are empathetic, pleasing, and having extreme patience and can relate to the patient who often is in his or her own world is needed the most. As the exact cause of Alzheimer's disease is still unknown, and there are no certain ways
to prevent this condition: a healthy lifestyle, good sleep, balanced diet, regular physical exercises, including walking, systematic mental stimulating, including yoga and medication, leading a less stressful life, and staying socially connected can help reduce the risk. Today, Alzheimer is at the forefront of biomedical research. Researchers are working to uncover as many aspects of this irreversible, progressive brain disorder. Some of the most remarkable progress has shed light on how it affects the brain, and we hope that this understanding will lead to new treatments. Alzheimer is a serious and challenging disease, and we can no longer ignore it. It most certainly needs better understanding of what causes it, what we can do to treat it, and help people and families who are living with it. To discuss this in great detail, we have with us eminent personalities who are experts in this field and have a rich knowledge on the subject at hand. I welcome them once again and look forward to an enriching conversation. I wish this webinar a great success. Thank you very much. Jai Hind. And back to Dr. Kesriji. Thank you, sir. Thank you so much for such an elaborate introduction and overview of Alzheimer's disease that you've just shared. And once again, thanks to all the faculties who have already joined us. I hope this is going to be an interesting session. As we all know, aging is inevitable, and the process of aging starts the moment we are born. The process, we all go through the various stages of life and finally come to the stage of the old age or the senior age, as we call it. And changes are taking place in our body at all the levels, at the cellular level, at the levels of metabolism. Even there are changes taking place in the genes of our body, that the way they are replicating, they are changing. So inevitably there is loss of function, and there is loss of function not only in the brain but all over the body and all the various organs of the body. Now I would like to quote here a shloka from Buddha Charita. Angam galitam palitam mundam dashan vihinam jatam tundam वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम. This, if translated in English, means a person's various limbs become decayed or weak. His or her head becomes gray-haired or bald. Mouth becomes toothless. Due to old age, will be forced to walk holding a walking stick. But what affects people who require Alzheimer's disease is a lot of other factors in life. The memories, the ability to recall, the ability to walk around, be with their family, friends, to relive those memories. These are some important aspects of life which are lost. So since memory is one of the most important aspects rather of Alzheimer's disease, I would like to know something about memory, and I would like to say that this is actually my personal question. This is something which I would like to know, and I'm sure all our viewers would like to know as well. So I'd come with this question to Dr. Shamsher Dwivedi, because with our previous experience, I know he can very masterfully make very complicated things very simple. So I'd like to ask you, sir, how do we store our memories? It is something like in the tape recorder or in the computer's hard disk that everything is written down and then we read it. How does it happen in our brain? So
Good afternoon, everybody, and thanks for giving this opportunity to interact with people. I would like to know, are the listeners, all of them would prefer English, Hindi, or a mixture of English and Hindi? I think it is better if you have a mixture of Hindi and English, Okay. the common language that we speak. Yeah, yeah. बोलचाल की भाषा. जी सर, बिल्कुल. So, जो आपने उदाहरण दिया, the examples that you gave of tape recorder and CDs, that is quite apt. क्योंकि जिस तरह से टेप रिकॉर्डर के टेप पे या सीडी पे जो माइक्रो लेवल पे कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से उधर चले जाते हैं और वो जो आप बोल रहे हैं या जो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वहाँ रिकॉर्ड हो जाता है. कुछ मॉलिक्यूल्स इधर से उधर हिलते हैं और उसको जब आप दोबारा कंप्यूटर में प्ले करते हैं तो कंप्यूटर उन चेंजेस को पहचान जाता है. कंप्यूटर अंडरस्टैंड द meaning of that change in the molecule which has taken place. Similarly, when we experience something, तो हमारे न्यूरोनल लेवल पे जो नर्व सेल्स हैं उनमें आपस में नेटवर्किंग होती है, जिनको हम एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स कहते हैं. वो जो डेंड्राइट्स हैं एक दूसरे नर्व को, एक जिस तरह से कंप्यूटर के टर्मिनल एक दूसरे से तारों से कनेक्टेड होते हैं, उसी तरह तार ह्यूमन नर्व सेल में भी तारें होती हैं जिनको डेंड्राइट्स कहते हैं, और वो एक दूसरे से गुथी हुई रहती हैं. इसी नेटवर्किंग में सारा इंफॉर्मेशन छिपा हुआ है. उसी डेंड्राइट में थोड़ा बहुत चेंज आता है, माइक्रो लेवल पे आता है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से शायद आप देख सकें. वो जो थोड़ा सा चेंज आता है वही एक मेमोरी है, एक मेमोरी का लिंक है. और जब एक पूरी घटना होती है तो कुछ डेंड्राइट इधर से उधर नेटवर्क बनाते हैं जो ब्रेन लेटर ऑन जब उसको रिट्रीव करना होता है, दोबारा से प्ले करना होता है उस मेमोरीज को, तो वो अपने आप समझ जाता है इन नेटवर्किंग का क्या मतलब है. तो ये जो एग्जाम्पल आपने दिया टेप रिकॉर्डर या कंप्यूटर या सीडी का, वो बहुत सही था, क्योंकि वहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स हिल जाते हैं अपनी जगह से, यहाँ पे कुछ नए कनेक्शंस बन जाते हैं डेंड्राइट्स के बीच में, जो कि मेमोरी का रूप ले लेते हैं. थैंक यू सर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने बहुत अच्छे से हमारे श्रोताओं को ये बात समझाई. डॉक्टर पद्मा, आई वुड लाइक टू कम ओवर टू यू. Sometimes, since we are talking about Alzheimer's disease and we understand that there's a memory loss, sometimes I also keep on forgetting things like where I kept my car keys, and at times I have to look for the keys of my house. So is it normal to forget things? I mean, when is it normal and when is it a disease? कब हमें लगेगा कि भाई अब तो बीमारी हो गई है? क्योंकि हम सभी लोग कुछ ना कुछ भूल जाते हैं. कभी पेन भूल गए, कभी चाबी भूल गए. I know. That's a great question, Dr. Kesri, and thank you for having me on board today. So the first thing is that you're asking whether forgetfulness is sine qua non to dementia. Definitely not. So not everything wherein there is forgetfulness means that there is dementia. And it is very common to forget things. In fact, I'm sure a lot of us make to-do lists in the morning, because there are such multitude of things. By the end of the day, there are bound to be things which are lost. And forgetting one, a shoe ka lace, socks, car keys, the remote, and there's so many things which keep happening all the time. So the two things in this. One is that in the natural course of life, you keep cluttering lot of stuff in the brain. And there are these limited number of neurons, limited amount of neurotransmitters which have to be kept in balance. And that amount of storage capacity, which may differ from person to person, just like our intelligence quotient also differs. And these circuits have very permanent memories established,
which you always call it as remote, and then you have something which is a learning ability, retaining stuff, and the brain automatically also serves out what is relevant and what is prioritized. When you are cluttering too many things, it is definitely possible to be able to forget few things in that clutter. That is individualistic. Some forget more, some forget less. You find a person going to a board exam who reads, cramps up, and in the exam time, they forget. But that doesn't mean that the child is demented. Said that though, ये जो to do list banana and forgetting some things is very common. So definitely you're not demented, I'm not demented at this point of time. Again, there are certain stuff which are, we call it as treatable varieties, wherein you sort of lose memory. We call it as reversible dementias, treatable dementias, in which some of these memory issues where you become a little more forgetful than ordinary. Maybe you do have some kind of a deficiency, which does include a list of things, and probably when we discuss the treatable part of it, we can talk about that though. But then most important red flag, wherein you say that I think I'm progressing towards this, versus, or somebody in your family says there's something wrong with this person, versus the natural, usual, normal, day-to-day forgetting things would be, the first red flag is the person who is actually getting into dementia never complains of a memory loss. That's the first thing. It is usually the caregiver, the family, his friends, his office people who will point out and say, ye banda to bhulte hain. There are, I'm remember one important thing. When you're talking of dementia, there are 6 cognitive domains. Memory is just one of them. There are a lot of other domains wherein if there is a problem and you have more than one and it is impacting your activities, that does qualify as in a definition of dementia. So in that cognitive domain, agar hum memory ka hi le, so it is a family and a caregiver who says ki banda forgetful hai. But the person, when you confront and they say, they will have an explanation as to in that particular situation why they have forgotten. They would never remember that they have forgotten. That is the adage. Except in a situation called minimum cognitive impairment, MCI, in which there is a 50% chance of progressing into dementia and 50% may not over a period of time, wherein there may still be an insight into that something is not quite okay with me, I may be forgetting. So broadly, if you're forgetting your car keys, doesn't mean you're demented. Number 2, it is always a red flag when someone else is pointing towards that there is forgetfulness and one doesn't have. Except in MCI, insight is one of the first things to go. So they forget that they have forgotten. That's the tagline for dementia. Thank you. I think this was really very important and very simply put up. That Actually, and let me, if I add 10 seconds more, is also yes, that yes, please, because please. we sort of the easiest thing that we sacrifice in our life is our sleep. Very Yes. easy to sacrifice, okay, in our 24 hours, because you have so many to do things. So especially this is for youngsters, wherein in a rat race and you need to get to point A to point B and be ahead of everybody. This seems to actually define the world as we exist right now. In fact, I think the whole universe. We'll come to sleep. I'll ask questions about sleep to in each one that of you. sleep also, you sort of you tend to forget in the day when you have this micro sleep. So I was just coming to that. Thanks. Okay. Thank you so much. It was very nice, elaborate, very simple, so that everyone could understand. अगर आपके परिवार में किसी को कोई भूलने लगे और उनको खुद समझ में ना आए, वो भूल रहे हैं और आप इसको नोटिस करें, so this could be a serious sign that you have to consult a neurologist. Now this new word has popped up, that is dementia. It has been repeated so many times. So Dr. Dhamija sir, I'll come over to you. हमें बताएं dementia क्या होता है? Good afternoon to everyone, and thank you, Rajput ji and Dr. Kesri and your team for having me. Again, last year also we had this similar webinar on World Alzheimer's Day, and me and Ritu was there, and Dr. Shamsher was also there, and pleasure to be back again. Dr. Padma very eloquently and very aptly described what is the difference between benign forgetfulness and the dementic illness or dementia. So
broadly speaking, I think the two main issues have to be highlighted. One is that the functional decline from the previous working. So that is very important, that person has definite decline in the functioning uh, from the previous level of the illness or previous level of his normal functioning. So that is documented. देखिए पिछले 6 महीने में 1 साल में इनको डेफिनेटली डिटीरियोरेशन हुई है इनके फंक्शनिंग में, इंडिपेंडेंस में और मेमोरी में भी और बाकी के डोमेन में भी. So that is very very important. और डिमेंशिया इट्स एज डॉक्टर पद्मा सेड, बहुत सारे इसमें फीचर्स हैं, बहुत सारे कॉग्निटिव डोमेन्स हैं, जिसमें मेमोरी एक है और बिहेवियरल दूसरा पैटर्न है कि आपका बिहेवियर चेंज हो गया, अग्रेसिवनेस हो गई, आपकी डिल्यूशन हेलुसिनेशंस हो गए, आपको आवाजें सुनाई दे रही हैं या दिखाई दे रहे हैं, शाम के टाइम पे ज़्यादा दिक्कत होने लगी जिसको हम सनडाउनिंग बोलते हैं. और इसके साथ साथ विजुअल स्पेशल जो है, रास्ते भूल गए आप या कहीं गए खो गए, वॉन्डरिंग हो गई, ज़्यादा सीवियर सिचुएशन में घर में भूल गए बेडरूम कहाँ पे है, टॉयलेट कहाँ पे है. इसके साथ स्पीच एंड लैंग्वेज, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. आपकी लैंग्वेज में प्रॉब्लम आना, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी होना, नाम भूलना, चेहरे पहचानना में दिक्कत होना, ये सब चीज़ें जो हैं इन एडिशन टू मेमोरी है. So dementia is not just memory. Dementia is a syndrome of so many things, clustering of so many other symptoms and domains being affected. तो ये बहुत important है. और एजिंग जो है वो एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है. और एजिंग जैसे आपने कहा कि इरिवर्सिबल है, इनएविटेबल है, कंटिन्यूअस है. और जैसे राजपूत जी ने भी मेंशन किया कि हमारी जो एजिंग पॉपुलेशन है वो बहुत रफ्तार से बढ़ रही है. इट्स इंक्रीजिंग, इट्स अबाउट टू बी डबल्ड इन नेक्स्ट 25 इयर्स, विच हम जो 2047 हम बोलते हैं, विजन 2047 इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इन इंडिया. आज की तारीख में हमारे पास तकरीबन 9% पीपल आर अबव द एज ऑफ 60 इयर्स and this figure will go to 20% in 2047, so double the number. Aging का मतलब ये है कि people will have social problems, people will have financial problems, people will have medical problems or health issues. So ये जो challenge आने वाला है हमारे लिए, we have to get ready for that. We have to strengthen our health system, our clinical services, our research. All these things have to be geared up. और उसमें ASSOCHAM जैसी संस्था जो है, जो आप राजपूत जी CSR के जिसके प्रधान हैं, एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती है. और मैं इस प्लेटफॉर्म से उनको रिक्वेस्ट भी करूंगा, अपील भी करूंगा कि CRS की फंडिंग जो है इंस्टीट्यूशंस लाइक एम्स है, भास है, इनको प्रोवाइड करें, चाहे वो परमानेंट स्ट्रक्चर्स के लिए हों, चाहे वो रिकरिंग एक्सपेंसेस के लिए हों, चाहे वो लैब्स हों, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो ट्रेनिंग हो, चाहे वो क्लिनिकल सर्विसेज को ऑगुमेंट करने के लिए हो. ऑफ कोर्स सोशल सिक्योरिटी और हेल्थ सिक्योरिटी में तो वो कर ही रहे होंगे. इन चीज़ों में भी हमें ध्यान देना है. और वी हैव टू ऑगुमेंट आवर सिस्टम टू गेट रेडी टू फेस दिस चैलेंज ऑफ एजिंग पॉपुलेशन. इसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि जो एजिंग पॉपुलेशन जिसकी हम 20% बात कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा कि 5 मिलियन लोग हैं हमारे इंडिया में विद डिमेंशिया, आई थिंक इट इज ग्रॉसली अंडर रिपोर्टेड. ये बहुत कम संख्या है, एक्चुअल में बहुत ज़्यादा संख्या है जो अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरिपोर्टेड, अनट्रीटेड, अनडायग्नोज्ड है. और उसके लिए हम ये चाहते हैं कि फैसिलिटीज बढ़ाई जाएं देश में और इंडस्ट्री को आगे आना चाहिए. और इसके लिए जैसे अभी इंस्टीट्यूट में शुरू हुआ है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग या जेरेंटोलॉजी, ऐसे ही जगह जगह पे ऐसे सेंटर्स खुलने चाहिए और इंस्टीट्यूशंस को भी सपोर्ट मिलनी चाहिए ताकि वो कैपेसिटी बिल्डिंग में भी आगे आएं और अपने जो है क्लिनिशियंस, जेराट्रिशियंस, न्यूरोलॉजिस्ट की संख्या बढ़ाएं जो इस जेराट्रिक न्यूरोलॉजी में ट्रेनिंग लें और आगे लोगों को ट्रेन करें. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. और सबसे बड़ी जो बात है, ये जो बात हम एजिंग पॉपुलेशन की करते हैं 20%, इसमें 70% ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन मोर देन 60 ईयर्स अभी भी रूरल एरियाज में है, जिसमें इनइक्वालिटी है, अर्बन रूरल डिवाइड है. उनको वो एक्सेस नहीं है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ द हेल्थ केयर उस एजिंग पॉपुलेशन में जो अनइक्वल है, जो नहीं है. तो वी हैव टू गियर अप टू मैनेज दैट ऑल्सो. और डिमेंशिया के लिए, एजिंग पॉपुलेशन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए संस्थाओं को साथ में सपोर्ट करना चाहिए. गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, बहुत सारे जो उनकी प्लान्स हैं, जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं एजिंग के लिए, जेरियाट्रिक्स के लिए, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज के लिए. उसके साथ साथ हम सब की भी जिम्मेवारी है कि हम भी आगे हैं. और आपकी अवेयरनेस के लिए, आपके लोगों के लिए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो डिमेंशिया के सिम्टम्स हैं, अलग अलग डिमेंशिया के सिम्टम्स अलग अलग टाइम पे आते हैं. जैसे अल्जाइमर्स की बात करें तो मेमोरी प्रीडोमिनेंट है,
बाकी जैसे फ्रंटो टेम्पोरल डिमेंशिया एक अलग टाइप का है जिसमें लैंग्वेज और बिहेवियरल प्रॉब्लम ज़्यादा है, और दूसरे डिमेंशियाज में विजुअल स्पेशियल प्रॉब्लम ज़्यादा है जिसको हम डीएलबी बोलते हैं. सो ऑल दीज थिंग्स हैव टू बी केप्ट इन माइंड, और रिकॉग्निशन, अर्ली रिकॉग्निशन एंड अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए केयर गिवर्स के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, पॉपुलेशन एट लार्ज को ये साइंस पता होने चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति फंक्शनली डिक्लाइन हुआ है, बैंकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, उसको फंक्शनली डे टू डे एक्टिविटीज मैनेज करने में दिक्कत आ रही है, अपनी अपॉइंटमेंट्स भूल रहे हैं आप, या एक ही चीज को आप बार बार दोहरा रहे हैं, रिपीटेडली एक ही क्वेश्चन आप सुबह से उठ के पूछ रहे हैं कि मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया या नहीं किया, फिर आधे घंटे में मैंने क्या खाया, आधे घंटे में दवाई मैंने खाई कि नहीं खाई. तो ये जो बार बार एक ही चीज को पूछना एक सिग्नल है कि पेशेंट्स को प्रॉब्लम है कॉग्निटिव डोमेन में, कॉग्निटिव फीचर्स में. तो ये एक साइंस है, वार्निंग साइंस है, रेड फ्लैग्स हैं जो कि फैमिलीज को, केयर गिवर को पहचानने चाहिए. और अगर आपको लगता है तो फिर मेडिकल हेल्प या असिस्टेंस की आवश्यकता में आपको जाना चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास, और फर्दर मैनेजमेंट होनी चाहिए. इसके साथ साथ हमारी कंट्री में एक और प्रॉब्लम है कि एज केयर वर्कर्स नहीं है जो ऐसे लोगों को मैनेज कर पाए. हेल्थ केयर वर्कर्स को भी हमें ट्रेन करना पड़ेगा, और केयर गिवर की जो बर्डन है उसको भी असेस करके उसको भी एड्रेस करना चाहिए. और ये सब इश्यूज जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है. Thank you, sir. Thank you so much. So nice of you. It was very elaborate discussion. रितु जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा. तो जैसे अभी डॉक्टर धमीजा ने भी बताया, एंड वी ऑल नो दैट प्रोबब्ली देयर इज अ ग्रेट डिवाइड इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, देयर इज अ ग्रेट अर्बन रूरल डिवाइड, and probably a lot of people with dementia, the elderly, they are not having exposure or facilities of healthcare, and probably they do not even understand that they have these problems. तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या और कोई भी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया में, हमारे देश भर में ऐसी कुछ एक्टिविटीज करती हैं जो रूरल इंडिया में एल्डरली की केयर के लिए जो प्रयास करती हैं, ये उनकी आउटरीच बढ़ाने के लिए कुछ हमें बता पाएंगे इसके बारे में? Thank you and good afternoon to all. So, Rajesh ji, सबसे पहले तो मैं बताऊं जो what Dr. Dhameja has said, that the first thing is to have the awareness and the sensitization of the community at large. Because unless until they know what is happening, whether it is a kind of problem for which they have to seek some health services or some experts' opinion, is the first thing. तो ये गवर्नमेंट भी, जैसे गवर्नमेंट का आपका जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है और आपका जो उसके अंदर जो डीएमएचपी चल रहा है, क्या हम उसमें इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं? दिस इज वन पार्ट. So because the government is the agency that can reach out to the millions and millions of people, and the health system is a vast. That is one part. But yes, NGOs like Helpage India and other NGOs can also play a role into that, where they can make aware the community, the senior citizens through various forums. और उनको वो बता सके कि भाई ये जैसे डॉक्टर हमीजा, डॉक्टर पद्मा was saying कि these are the red flags. जो अर्ली रिकॉग्निशन है, the first thing is to get the early recognition. Early signs and symptoms क्या है? Usually अगर हम हमारे जैसे old age homes भी हैं, and we see that people are not able to recognize if it is a problem at all. भाई ये तो वो सोचते हैं कि हाँ भूल रहा है, तो भूल रहा है तो ये तो कॉमन है, एजिंग है ना, एज के साथ साथ कुछ चीजें भूल जाते हैं, बट कहाँ वो डिजीज बन गया है. सो अगर हम अर्ली आइडेंटिफाई कर पाए और अर्ली इंटरवेंशन कर पाए, तब हम कुछ इस प्रॉब्लम को हद तक सॉल्व, नॉट दैट वी आर एबल टू रिजॉल्व इट, बट टू सम एक्सटेंट. सो एनजीओज को भी, जैसे मैंने कहा, सपोर्ट, सी एनजीओज को सपोर्ट देने के लिए वी हैव टू गेट, हम जहाँ पे सीएसआर सपोर्ट को सामने आना चाहिए, गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, एनजीओज को इन ऑल द एक्टिविटीज. सो गवर्नमेंट अलोन cannot reach out to each and everyone. So if it is a joint effort, and it has to be a joint and collaborative effort of all the government, the non-government organizations like Helpage India, also the corporates, like and then even the other companies. If we all come together, then only we can have this problem, we can reach out to some extent. So this is my part. Thank you. Caregiving, as Dr. Dhameja said, yes, the capacity building of the caregiver, the family caregiver, and also the community caregiver. They must be trained how to deal with patients of dementia.
or the family members of dementia? Thank you so much. Because there are so many things that I would request you, our esteemed faculty, to tell our viewers, our audience, and this is a very complex and a very complicated disease. There are some points which I would request once again our specialists to lay bare in front of our audience. डॉक्टर द्विवेदी सर, एक बार फिर से सरल शब्दों में बताएं कि कब डाउट कर सकें, कब हमें शक होना चाहिए कि ये अल्जाइमर्स डिजीज की तरह, अगर हमारे श्रोताओं में किसी के घर में वृद्ध व्यक्ति हैं, हमारे एल्डर्स हैं, कब हमें इस बात पे डाउट होना चाहिए, प्लीज। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है जो डॉक्टर धमीजा ने भी कहा कि वो पहले की भांति इज द पर्सन एबल टू कंडक्ट और परफॉर्म हिज एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जो दैनिक जीवन में क्रियाकलाप है वो कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, जैसे बैंक जाना, जैसे पैसे का लेन देन, जैसे बाजार जा करके अपनी चॉइस की चीजें डिसाइड करना। अगर लगे कि जो आदमी पहले शॉपिंग कर पा रहा था पैसे की लेन देन में गड़बड़ी करने लग गया है, किसी को ज्यादा पैसा दे रहा है, किसी को भूल जाता है कि पैसा दिया या नहीं दिया, जाता है शॉपिंग करने तो वहां खड़ा होकर के कंफ्यूज हो जाता है, द पर्सन इज एब्सोल्युटली कंफ्यूज कि व्हाट डू आई पिक, हेजिटेशन हो रही है हर चीज में। एक ही बात को कई बार क्या होता है कि हम कोई चीज भूल जाते हैं, बातचीत हुई और हम भूल गए, और जैसे ही आपको याद दिलाया जाता है मैंने ऐसा कहा था आपसे, आप तुरंत कहते हैं हाँ 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 कहा था, याद आ गया याद आ गया। और एक होता है कि आप बार बार उसको रिमाइंड कराते रहे कि आपने खाना नाश्ता कर लिया है और बोले नहीं मैंने तो नाश्ता नहीं किया, तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं स्मृति दोष या डिमेंशिया शुरू हो गया। या कोई इंसान जो अपने एक सिंपल चीज जैसे चाय बनाना, चाय बनाने के लिए आदमी को क्या क्या स्टेप्स लेने होते हैं, वो गया आदमी जो रोज चाय बनाता था और वहां जाकर के खड़ा है काउंटर पे, उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या किसमें मिलाना है, उससे पता चला कि पानी डाल दिया चाय के डब्बे में और चीनी डाल दी पानी में। तो इस तरह का जो कंफ्यूजन हुआ वो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन यानी कि दैनिक कार्यकलाप में जब आदमी ग्रॉस मिस्टेक्स करने लगे। और मैं अपने पेशेंट को एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं जो मैं चाहूंगा कि अपने हर बुजुर्ग को घर में पूछें कि पापा आपने सुबह आज नाश्ते में क्या खाया और कल रात को डिनर में क्या खाया, सारी चीजें बता दीजिए। अगर वो नहीं बता पा रहा है करेक्टली, रिपीटेडली मिस कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं स्मृति दोष शुरू हो गया है। जैसा पहले स्पीकर्स ने कहा, डॉक्टर पद्मा ने, डॉक्टर धमीजा ने, डॉक्टर रितु ने, कि जरूरी नहीं है कि मेमोरी लॉस से ही बीमारी शुरू हो। बीमारी हो सकता है जस्ट हो सकता है फैक्चुअल मेमोरी ठीक है, लेकिन एक एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कपड़ा कैसे पहनना है वही समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ हाथ मैं डालूं। इट कैन स्टार्ट विथ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, इट कैन स्टार्ट विथ मेमोरी। फाइनली जो एडवांस डिमेंशिया के सारे पेशेंट एक जैसे दिखते हैं, लेकिन शुरुआत में जरूरी नहीं है कि फैक्चुअल मेमोरी से ही शुरू हो सकता है फैक्ट्स उसको याद है लेकिन सडनली बिहेवियर में चेंज हो गया। एक आदमी एंटी सोशल बिहेवियर करने लगा, बिल्कुल शांत स्वभाव का आदमी अचानक एग्रेसिव हो गया है, अपना काम जो है ठीक से कर नहीं पा रहा है, कपड़ा पहन नहीं पा रहा है, जो काम उसके लिए बाएं हाथ का खेल हुआ करता था आज उसमें उसको एफर्ट लग रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं डिमेंशिया की शायद शुरुआत हो गई है, और तुरंत डॉक्टर के पास ले जाएं और ये ना समझें कि ये उम्र का तकाजा है। पहले एक शब्द होता था सठिया गया है, 60 के बाद मान लिया जाता था कि अगर डिमेंशिया हो गया किसी को तो इट इज ए नेचुरल एजिंग। ये समझाने की जरूरत है कि 60 के बाद भी बहुत लंबी जिंदगी है, और ये ना मान ले कि जो 60 का हो गया अगर उसने कुछ एबनॉर्मल बिहेव किया वो एक्सेप्टेबल है उस एज में, वो चीज लोगों को समझाने की जरूरत है। थैंक यू सर, आई थिंक दिस वाज वेरी वैल्यूएबल, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में देख सकते हैं, कोई ना कोई तो जरूर हमारे आसपास ऐसा रहा होगा, और कोई मिस ना हो जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो मैंने शुरू में श्लोक पढ़ा
उसकी लास्ट लाइन मैंने उसका अनुवाद नहीं किया था, and it goes like this that even then the ball of greed and desire does not abandon the person in normal aging. Dr. Padma ma'am, I'd like to ask you कि Alzheimer's disease में emotional changes भी आते हैं क्या? जो पहले जैसा डिजायर होता था, श्लोक में ग्रीड लिखा था, तो उन सब चीजों में भी बदलाव आता है? Actually, behavior changes dementia में है, and Alzheimer's, in fact, is probably more memory related. There are other varieties of dementia where behavior predominant is extremely common. They start with behavior. They are not the person you know. Suddenly personality change हो गया, जो बहुत, they are very sedate, suddenly have become more angry, more aggressive, they become suspicious. But even in Alzheimer's dementia, jahan pe memory is the main thing, starts off with, recall, recent, learning. And then the language, which is very, very common. So humko bhi, I'm sure you also must have observed that sometimes you see a face and you can't name the face, and you keep thinking कि कोई आ जाए उनको नाम से बुलाए ताकि आपको याद आ जाए. Now that's not exactly dementia, but then frequent naming difficulty, जो relatives का भी बहुत close लोगों का नाम भूल जाते, when you're forgetting, they become sort of very frustrated. Because language, the problem aa jati and you cannot communicate to others, you become very frustrated. The very common behavior problem in Alzheimer's is apathy and depression. So they go into that depression mode because आप communicate नहीं कर पाओगे, so आप withdrawn हो जाते हैं, they lose interest, so they are not bothered about self or surroundings. So जो भी चीजें family में हो रही है, कोई festival हो रहा है, कोई सेरेमनी हो रही है, किसी के शादी कराना है, किसी से बात करना है, you're the head of the family, you're not bothered, you're not interested, you're not taking initiative. So, those kind of personality changes will come. There is a change even in your food habits. तो पहले स्वीट बिल्कुल ही पसंद नहीं है, अब तो स्वीट क्रेविंग्स हो गया, स्वीट ही खाते जा रहे हैं. There's a change in your food habits, which seems unusual. And people say housewives or cooking, तो वो जो आ जाती है कि उसमें salt डाल दिया instead of sugar, cooking में, and that's because of your memory issues or sometimes executive issues आ जाते हैं. But another very important thing in Alzheimer's, and I'm telling you this, Dr. Casey, is because I had gone through this. My mother had Alzheimer's dementia. I'm the only child and I had nursed her, and I'm very fortunate, and I'm very fortunate to the God to have given me an opportunity, because I became her mother. I don't think a lot of us get that opportunity. जो हम अपने माँ बाप को हम माँ बाप बन गए, because she was my baby. So I had gone through the entire thing of 10-15 years. पहले शुरुआत में they become suspicious. They become, suddenly they would think कि मेरा पैसे क्या चोरी तो नहीं हो रहा है. Show me the bank accounts, show me this, if they're educated. And then they develop these delusions कि वो लोग मेरे से बात कर रहे हैं, कि मेरे बारे में ऐसे कर रहे हैं. They become suspicious of people who are very close to them. So, these kind of things, and the family becomes very, very, sort of disturbed, because the family feels कि ये कैसे क्यों कर रहे हैं? And I am the person who's taking care, and मेरे पर ही शक कर रहे हैं. These kind of emotions going through it, and somebody, when they say caregiver, capacity building में, the caregiver has to understand and also say कि भैया, and वो कहते हैं कि बाहर it is, it's dark, it is night, there is a moon, and they say वो नहीं, वो तो सूर्य किरण है. तो डोंट गो अराउंड करेक्टिंग हिम कि नहीं भैया ये मून है, से हाँ सूर्य भगवान है, ठीक है, आप नमस्कार कर लो. देयर इज अ वे टू मैनेज इट एंड कीप दैट पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, एंड ऑलवेज टेल देम टू होल्ड हैंड एंड से दे आर loved and cared for, and they feel that, and they, in spite of whatever they go through, and even in deep inside, they do understand within themselves that somebody is there. That is where you have the palliative care and all those things come in. But yes, personality change, behavior changes are integral to all forms of dementia. And in Alzheimer's, though memory is the first one, these things do come in pretty much early. And then things will go on, does all dementia lead to Alzheimer's? Both of them are linked, absolutely.
or someone may be demented and not having Alzheimer's? Yes, such a beautiful question. I'm very happy you asked that. Very important. All dementias are not Alzheimer's dementia. All dementias are not neurodegenerative. तो अगर हम डिमेंशिया की कैटेगरी ही ले लें तो न्यूरो डिजेनरेटिव है जहां पे इट इज इनएक्सोरेबल, इट इज प्रोग्रेसिव, यू कैन डू एनीथिंग अबाउट इट बिकॉज देयर इज अ प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन द ब्रेन। उसमें कॉमनेस्ट इज अल्जाइमर्स। उसके अलावा आपका प्रोफेसर धमीजा हैज mentioned about frontotemporal, DLBD, the whole host of it, and we don't have to talk about it. और दूसरा है जो जो बिकॉज ऑफ अ सर्टेन इंसल्ट हुई है, हेड इंजरीज। बहुत सारे हेड इंजरीज में द पीपल बिकम डिमेंटेड। सो देयर आर सम which have happened, they won't progress further. Then there are these treatable dementias. जो treatable dementias are the ones we are very bothered about, जिसमें इन्फेक्शंस आ जाते हैं, डेफिशिएंसीज आती, हार्मोन्स आते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स आते हैं, देयर आर हाइड्रोसेफेलस, देयर आर करेक्टेबल बाय सर्जरी, करेक्टेबल बाय गिविंग सम मेडिसिन्स, ऑटो इम्यून फिनोमिना, टॉक्सिन्स, ड्रग्स। अगर आप कोई एल्डरली को ले ले, दिस इज इंपॉर्टेंट डॉक्टर केसरी की, अगर कोई एल्डरली जेंटलमैन 75 ईयर्स ओल्ड, उनको कुछ यूरिन की इन्फेक्शन हो गया, ही इज अदरवाइज ऑल राइट, यूरिन इन्फेक्शन उनको बुखार एंड यूरिन प्रॉब्लम से नहीं होता, दे एक्चुअली बिकम डिसोरिएंटेड एंड पीपल विल थिंक ये क्या हो गया इनको। दे समटाइम्स गेट इन एज डिसोरिएंटेड पर्सन। देयर वर पीपल हु वर एडमिटेड विद अस कि इनको डिमेंशिया हो गया एंड टर्न्ड आउट टू हैव अ निमोनिया इन द चेस्ट। द वे दे बिहेव एंड दे कम, picking them up, infections problems, there are other chronic infections, subdural hematoma, that lot of treatable conditions, autoimmune is one. Drugs is very important because जो medicine हम देते हैं, कुछ कोई इन्फेक्शन के लिए, कुछ ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, देयर आर लॉट ऑफ दीज मेडिसिन। पार्किंसन से उसकी जो दवाई देते, दे सडनली गो डाउन इन देयर, they become confused, their memory goes for a six, they look demented. So you must understand metabolic, low sodium, low sugar, there's so many things. So all dementias are not Alzheimer's and not all dementias are untreatable. Definitely, this is what I wanted to hear from you, ma'am, so that a lot of people are listening to us and they may get confused because some of the symptoms are very common. So it is very important to approach your doctor. अपने डॉक्टर को जरूर दिखाएं अगर आपके परिवार में या आपके प्रियजनों में किसी को भी ऐसे कोई भी सिम्टम है, क्योंकि हर ये सिम्टम होने का मतलब ये नहीं कि वो अल्जाइमर्स डिजीज है। और हम अल्जाइमर्स डिजीज के बारे में इतनी चिंता क्यों करते हैं? डॉक्टर धमीजा, प्लीज हमारे लिसनर्स को, श्रोताओं को बताइए कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू डायग्नोज द अल्जाइमर्स डिजीज, व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर in a patient who is diagnosed with Alzheimer's, or we should rule it out? एग्जैक्टली तो ये जो अल्जाइमर्स डिजीज जो है, एक तरह का जो डिमेंशिया भी डॉक्टर पद्मा ने बताया, इसकी बहुत इम्प्लीकेशंस हैं। सिर्फ मेडिकल इम्प्लीकेशंस तो हैं ही, जिसकी हम कोशिश करते हैं कि मैनेज करें सिम्टम वाइज, और अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं है जो जिससे इसकी प्रोग्रेशन को रोका जा सके या रिवर्स किया जा सके। लेकिन जो इसके मुख्य लक्षण हैं जिसकी वजह से फंक्शनल डिक्लाइन है या डिसेबिलिटी है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं ताकि उनकी लाइफ जो है कंफर्टेबल रहे। और इसलिए पहचानना जरूरी है कि बहुत सारे डिसीजंस हैं, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस हैं, आपने लेने हैं फैमिली में, या आपने आगे की प्लान करना है आपकी। आजकल आपको पता है कि इंडिया में भी देयर इज ए डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, देयर इज ए सोशल आइसोलेशन। सारे के सारे ये फैक्टर्स मैनेज करने पड़ते हैं साथ में, जिस पेशेंट को अल्जाइमर्स डिजीज पता लगे, और जितनी जल्दी पता लगे उतनी जल्दी ही आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अभी कुछ देशों में एडवांस केयर प्लानिंग जो है लीगलाइज है, और आप अपनी मेडिकल पावर ऑफ अटॉर्नी भी लिख सकते हैं। भारत में भी ऐसा मूवमेंट चल रहा है, और जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन आया है कि आप अपने बारे में अपनी एडवांस केयर प्लानिंग बना सकते हैं। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने अभी किया नहीं है, वो अभी शायद वर्क इन प्रोग्रेस है, और जो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है उस दिशा में कार्य चल रहा है। लेकिन डायग्नोस करना कितना जरूरी है, ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीजें लाइफ में, फैमिली में और सोसाइटी में आपको प्लान करनी पड़ती हैं, और मैनेज करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं या तो बाहर गुम हो सकते हैं, वॉन्डरिंग में जा सकते हैं, रास्ता भूल सकते हैं, अपने लेन देन में जो है गफलत कर सकते हैं कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं, बिहेवियरल इश्यू हो सकते हैं कि आपने किसी से बहुत ज़्यादा जो गुस्सा किया, अग्रेसिवनेस किया, आपने सस्पिशियस हो गए, आपने दूसरों के प्रति उतना केयर नहीं किया, एपैथी हो गई, या आप डिप्रेशन में चले गए।
ये सब इश्यूज मैनेज हो सकते हैं, हम उनको कंफर्टेबल कर सकते हैं। इसलिए उनको जल्दी डायग्नोस करना और जल्दी ट्रीट करना या मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं डॉक्टर पद्मा की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जो ट्रीटेबल डिमेंशियाज हैं, कुछ प्रिवेंशन भी हैं, कुछ प्रिवेंटेबल भी हैं, जिनके बारे में भी बात करना बहुत जरूरी है इस प्लेटफॉर्म पे। हम ज्यादातर फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं कि आपको हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी फिजिकल एक्टिव रहना चाहिए, आपको 30 मिनट्स रोज ब्रिस्क वॉक करना चाहिए, जिसको हम कहते हैं कि वॉकिंग इज ए न्यू मेडिसिन नाउ। लेकिन फिजिकल फिटनेस के साथ साथ आपको ब्रेन की फिटनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन के लिए कॉग्निटिव फिटनेस को हम कहते हैं, कॉग्निटिव फिटनेस होना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको फिजिकल फिटनेस है। फिजिकल फिटनेस में आप एरोबिक्स करते हैं, वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं। कॉग्निटिव फिटनेस में आप सोशली एक्टिव रहते हैं, आपके न्यूरॉन्स को आप पुनर्जीवित करते हैं, हेल्दी करते हैं, जिसमें आप लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज है, नई हॉबी है, नए फ्रेंड्स बनाना है, सोशली एक्टिव रहना है। ये सब चीजें आपके ब्रेन को हेल्दी करते हैं और कनेक्शंस को स्ट्रेंथन करते हैं, जो ये प्रिवेंट करती हैं डिक्लाइन को, न्यूरॉन्स के डिक्लाइन को। तो आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखिए। और ब्रेन हेल्थ आज की तारीख में बहुत बड़ा एक इशू बनने वाला है। WHO ने अपनी जनरल असेंबली में मई 2022 में ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है कि हम सारे मेंबर स्टेट्स, तकरीबन 200 कंट्रीज हैं, ब्रेन हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, एपिलेप्सी के ऊपर काम करेंगे और मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, ताकि जनता में, लोगों में, सभी देशों में, चाहे वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, चाहे वो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, सभी में इक्वल एक्सेस, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ जो है ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट, मेडिसिन, डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज की रहे। तो एक बहुत बड़ा लैंडमार्क डिसीजन हुआ है। और इसके लिए एक छोटी सी चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि एक नया कंसेप्ट आया है कॉग्निटिव रिजर्व का। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं, अगर कोई सडन ऊंचाई आती है, चढ़ान आती है, ढलान आती है, तो आपके गियर्स आप चेंज करके फटाफट उसी स्पीड में आप ले जाते हैं। वैसे ही हमारा ब्रेन भी अगर कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन में आता है, कोई ऐसा कोई रोड ब्लॉक आता है, तो अपने आप को हैंडल कर लेता है, मैनेज कर लेता है। उसमें ये कैपेसिटी होती है, उस कैपेसिटी को हमें और बढ़ाना चाहिए, हमारा कॉग्निटिव रिजर्व बढ़ना चाहिए। और वो जो मेथड मैंने आपको बताए हैं कि कैसे हम नेटवर्क्स अपने इम्प्रूव कर सकते हैं, वो सब चीजें करनी चाहिए, ताकि आप कॉग्निटिवली भी फिट रहें और फिजिकली भी फिट रहें। थैंक यू सर, थैंक यू। आई थिंक हमारे सब श्रोताओं के मन में अब एक यही सवाल आ रहा हो कि इफ दिस इज सच ड्रास्टिक डिजीज, it's literally a one-way ticket. So there must be some ways of preventing if there is no treatment. So we are not going to touch on treatment. I would request first Dr. Dwivedi sir, and then I'd ask you, madam, to discuss about the prevention of this disease, if it is possible, to give us a big wholesome concept of prevention. Sir, first you. You're muted, sir. Unmute kar lijiye. Yeah. So the most important thing to incorporate in one's lifestyle is right food, right kind of exercise, and a watch on certain other diseases which can increase your risk of getting Alzheimer's, which is diabetes, hypertension, dyslipidemia, and also protect your head. Like those who have frequent injuries to head, like boxers, etc., they are more likely to get Alzheimer's. So you have to, when you are pursuing a sport, try to pursue a sport where there are less chances of head injury. But coming back to the right food, so there was a lot of studies and meta-analysis done, and they came to a diet which is known as the mind diet. अब माइंड डाइट को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उसको इनकॉर्पोरेट करना होगा। माइंड डाइट एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है, उसमें से बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हमारे डाइट में शामिल हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ट्विकिंग की जरूरत है। जैसे वो कहते हैं कि आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाने चाहिए। हमें इस बात का ध्यान देना है कि वेजिटेबल खाने चाहिए, और उसको मेडिटेरेनियन डाइट कहते हैं। इसलिए वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेडिटेरियन डाइट में फ्राइंग नहीं होती है, सॉटिंग होती है। ये नहीं कि हरी सब्जी ली, उसको काला कर दिया मसाले डाल के और तल के, उससे उसका कोई फायदा नहीं। पालक के पकौड़े खाने से कोई फायदा नहीं होगा लीफी वेजिटेबल का। तो इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ फूड आइटम्स तो आप पढ़ लेते हैं इंटरनेट पे भी कि क्या क्या खाना है,
लेकिन वो जो पकाने का स्टाइल है वो भूल करके उनको इस फॉर्म में खाते हैं कि तब तक वो कूड़ा हो चुका होता है, इट बिकम्स अ गार्बेज। तो अगर आपको खाने में इंपॉर्टेंट चीजें वो है कि बेरीज खानी है या फ्रूट्स खाना है, तो जो लोकल बेरीज है, हमारे यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट बेरी है जिसको आयुर्वेद में भी कहा गया है वो है आंवला, विच इज गूसबेरी। अब जो वेस्टर्न फूड में स्ट्रॉबेरी बिकम्स दैट इंपॉर्टेंट। तो हमें अपने माइंड डाइट को जिसके सारे इंग्रेडिएंट्स हैं और पकाने के स्टाइल को इंडियनाइज करना होगा। सिर्फ स्ट्रॉबेरी खाना जरूरी नहीं है, अपनी लोकल बेरीज भी आप खा सकते हैं। तो एक माइंड डाइट है। एक्सरसाइज में जो इम्पोर्टेंट चीज है, अराउंड 150 मिनट्स ऑफ वॉकिंग इन ए वीक, दैट इज गुड इनफ टू गिव यू। आप अगर हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं तो उसका भी एक प्लेटो होता है, एक पॉइंट के बियॉन्ड आप अपने इंजरीज के चांसेस बढ़ाने लगते हैं। तो आप उस जोन में जाइए जो कि हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। 40 मिनट्स ऑफ वॉकिंग 5 टाइम्स ए वीक इज गुड इनफ। उसके बियॉन्ड अगर आपने आप कोई स्पोर्ट्स कर रहे हैं जहां आपकी इंजरी के चांसेस हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपकी बॉडी, आपकी एज उसको ले पाएगी या ना ले पाएगी। पहले मेडिकल अपना चेकअप करा ले कराने के पहले। तो ये कुछ एहतियात एंथुजियास्टिक होके पहले दिन ही आपने 5 किलोमीटर दौड़ने की कोशिश की और हार्ट अटैक के चांसेस हो गए, जो कि आजकल हो रहा है। लोग एंथुजियाज्म में ओवरडू कर रहे हैं। तो 40 मिनट्स ऑफ वॉक 5 times a week, if one is doing, one is incurring all the benefits which exercise can give you. एक पॉइंट के बियॉन्ड आप जो एक्सरसाइज करते हैं या ओवर एक्सरसाइज करते हैं उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ जितनी जरूरत है उतना करना पड़ेगा। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि मैन इज ए सोशल एनिमल, ये सोशियोलॉजिस्ट ने कहा था। लेकिन जिस तरह हमारे लिए खाना जरूरी है वैसे ही सोशलाइज करना जरूरी है। अब डॉक्टर धमीजा को मैं कितने सालों से नहीं मिला हूँ, सिर्फ लैपटॉप पे, लेकिन ये सोशलाइजेशन भी अच्छा है। आज की डेट में जो व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कॉलिंग शुरू हो गई है ना, कुछ सोशलाइजेशन हो रहा है। वो आदमी के दिमाग की खुराक है सोशलाइजेशन। जितना इम्पोर्टेंट सही खाना जरूरी है, जितना इम्पोर्टेंट है होल ग्रेन, फ्रूट्स, वेजिटेबल, बेरीज, ये जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही सोशलाइजेशन भी इम्पोर्टेंट है। जो लोग लोनली हैं, जो लोग डिप्रेस्ड हैं, उनके चांसेस ज्यादा होते हैं डिमेंशिया होने के। जो लोग फिजिकली एक्टिव नहीं है उनके चांसेस ज्यादा होते हैं। तो दोस्त बनाओ। और बहुत इम्पोर्टेंट है, एक प्लेटफॉर्म पे मैंने अभी थोड़े दिन पहले शेयर किया था पद्मा जी के साथ, डॉक्टर पद्मा के साथ। तो मैंने कहा था स्टार्ट बिहेविंग लाइक ए 15-year-old किड। आप 15 साल की तरह अगर बिहेव करेंगे, जिनके दोस्त होते हैं, खेलने जाते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपकी बॉडी 15 साल की हो जाएगी। जिस तरह से आप सोचते हैं, वेदों में लिखा है कि जो आप सोचते हो वही आप होते हो। तो वो चीज बॉडी के मामले में भी है। अगर आप 15 साल के बच्चे की तरह, टीनेजर की तरह बिहेव करेंगे, आप देखेंगे बॉडी में चेंजेस होने लगे टीनेजर वाले, यू बिकम यंगर। तो शौक पालना बड़ा जरूरी है। शौक पालिए, ये नहीं कि अब तो मेरा शौक पालने की उम्र चली गई। नए नए शौक पालिए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्लर्टिंग, बट आई एम टॉकिंग अबाउट म्यूजिक, आई एम टॉकिंग अबाउट न्यू स्पोर्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट स्विमिंग। नहीं जानते थे, क्या हुआ, नहीं पूरी जिंदगी सीखा, अब स्विमिंग सीखना शुरू करो, जाके कूद जाओ स्विमिंग पूल में और उसको बोलो इंस्ट्रक्टर को मुझे सिखाओ। प्रिकॉशंस लेके टीनेजर बन जाइए। जो काम टीनेजर करता है अगर आप करेंगे, दोस्तों से मिलेगा, खेलेगा, दौड़ेगा, खाएगा पिएगा, वो ठीक रहेगा। बहुत बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक बात मुझे याद आ रही है, आपने पिछले प्रोग्राम में बताई थी नई भाषा सीखने के बारे में। हाँ, नई भाषा सीखनी चाहिए, नए लैंग्वेजेस सीखने चाहिए, नए स्पोर्ट्स सीखने चाहिए, म्यूजिक। आपने जिंदगी भर हारमोनियम नहीं बैठा, उठा लीजिए हारमोनियम, चले जाइए स्विमिंग पूल में। प्रिकॉशंस लेते हुए सारी नई चीज कीजिए। आप शुरू करेंगे और साल भर के भीतर आप एक्चुअली 15-year-old हो जाएंगे। बिल्कुल। आई थिंक वी विल टेक दिस लेसन बाय हार्ट।
मैडम आपने स्लीप के बारे में बात किया आजकल हर फोरम में एंड देयर लॉट ऑफ रिसर्च दैट स्लीप इज द थर्ड इम्पोर्टेंट स्टेम ऑफ प्रिवेंशन विद डाइट एंड एक्सरसाइज तो हमें स्लीप के बारे में बताइए इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप एंड व्हाट आर योर अदर व्यूज आप क्या बताना चाहेंगी in addition to what Yes, Dr. so Divya said. abhi tak, Dr. Dwivedi has excellently enumerated, how you can prevent dementia. He is a great orator, and also Professor Dhamija. I mean, I've shared stage with both of them. They are both iconic. Now, I'm not going to repeat what they've said. So there is a Lancet Commission on Prevention of Dementia, which was published in year 2017. So it's not all that old and not that new either. So usme in the midlife, there is, the preventive aspects agar middle life, somebody who's from say 40 years to about 60, you do this, then you have 35% chance of preventing dementia. And that means 35% is a big thing, almost like 1 in 3. So in that they said, you have to prevent hearing प्रॉब्लम सो अगर किसी को भी हियरिंग की प्रॉब्लम है तो प्लीज उनको तो कोई हियरिंग एड दे दीजिएगा डोंट डू एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट वांट टू टेक हियरिंग एड बिकॉज इट इज cumbersome. One is it has been said deafness. The second is besides everything, taking care of diabetes, hypertension is the biggest problem. Take care of the middle life hypertension, be very careful. Of course, no smoking, no excessive alcohol, all those things. The social networking is also definitely there. And in this part of it, that the learning new skills and new languages and all. But I think beyond this midlife thing, I want to shift gears towards the younger people. In the youth onwards, and considering the youth of today, the entire world, one is, as you said, sleep hygiene. So the sleep hygiene essentially is, although human beings are divided into larks and there are something called owls and something called larks. Owl is a person who's awake the whole night and then sleeps the whole day, and there are a lot of teenagers who do this. Lark is a person who actually gets up early in the morning and sleeps early in the night, which is our age old tradition. They said that human brains are not owls. They are basically wired like larks. Therefore, your 10 to 6 sleep, it is also not कि 12 बजे सो जाए, 8 बजे उठे, 2 बजे सो जाए, and सुबह 10 बजे उठे. This kind of a sleep hygiene part of it, even though 8 hours your clocking is not good. Second is fragmented sleep. And number 3 is doing everything in bed. Therefore, you're compromising on 3 hours, 4 hours of sleep, and then you're meeting deadlines, which has become a problem in a lot of professions. So sleep hygiene is important because that is definitely not going to take care of toxins building up in the brain. This is a message to youth that they should not. तो ये जो बहुत important होती है, they need to do, but whenever now the habit बन के, even when they have time to sleep, they don't. They will look at the YouTubes, they will look at a movie, they will do something else. Second is living in a virtual world. A lot of people are just living in the virtual world. They need to get out of it and do a personal social network. This is again for the youth. That's another important thing. And of course, the third actually is also the lifestyle issues about, we did speak about very passingly, but smoking and excessive alcohol and drugs. So these are the ones which, which have. And the last, and this is my final statement, please wear helmets. Because the Bhagavan ne ek hi natural helmet diya, and that is for the brain. We have a skull. There's nothing else in the human body which is as thick as a skull, because this is one thing which you cannot afford to have it injured. So in fact, one of the biggest causes of dementia in young people with disability is head injuries. So wear the helmets. I think besides everything that they have talked about, and the last one, of course, is Professor Dhamija's cognitive reserve. I would equate it to your bank balance. As much of balance you have, you will never become poor, even if you have excessive expenditure. Cognitive reserve you build in by learning, and learning. Use your brain, use it or lose it. That's the statement. Oh, I think that was a wonderful line. Use it or lose it. Dr. Dhamija sir, would you like to add something? How to prevent dementia? जो साइंटिफिक लिटरेचर है वो उसमें दो चीजें एडिशनल कही गई हैं. वन इज दैट यू कट डाउन योर सॉल्ट. ठीक है, इफ यू कट डाउन योर सॉल्ट to 50%, your chances of having stroke or dementia would be substantially reduced. So obviously,
शुगर के साथ साथ, शुगर पे बहुत लोग आजकल बात करते हैं लेकिन सॉल्ट पे बात नहीं करते हैं। सॉल्ट भी उतना इंपॉर्टेंट है, और ब्लड प्रेशर को कम करना हो चाहे स्ट्रोक को कम करना हो, और स्ट्रोक से जो वैस्कुलर डिमेंशिया होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो सकता है, और सारे के सारे आपकी जो हेल्दी हैबिट्स हैं वो बन सकते हैं। सेकेंडली इज लॉट ऑफ फ्रूट्स in your diet. So in addition to your salads and green vegetables, fruits की serving 5 serving रोज होनी चाहिए, which is protective and very good beneficial for as having a balanced diet as well as nutritious diet. ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरा ये कि जब स्लीप की बात करते हैं, स्लीप हाइजीन की बात करते हैं, तो डॉक्टर पद्मा ने बहुत अच्छे से समझाया है कि स्लीप हाइजीन पे हमें ध्यान देना चाहिए, क्वालिटी ऑफ स्लीप पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि स्लीप एक ऐसा टाइम है जब आपका ब्रेन आपको आपकी बैटरीज को रिचार्ज करता है, आपकी मेमोरीज को कंसोलिडेट करता है, आपके लिए जो नेटवर्किंग है उसको कंसोलिडेट करता है। तो स्लीप की क्वालिटी ही अच्छी होनी चाहिए, और आपके बेडरूम में सिर्फ सोने के सिवा और कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे वो रीडिंग राइटिंग आप बेशक बुक ले सकते हैं, लेकिन बाकी की चीजें आपके बेडरूम में नहीं होनी चाहिए। और साथ में स्क्रीन टाइम जो है, आपका जो टीवी है या आपका लैपटॉप है, जो आपका मोबाइल है, जो आपका आईपैड है, वो स्क्रीन टाइम पे लिमिट रखना चाहिए। उससे नींद की आपकी जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, और भगवान ने ब्रेन के सेल ऐसे बनाए हैं कि जो कि रीजनरेट या दोबारा नहीं बन सकते हैं। आपके पास लिमिटेड बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, और वो धीरे धीरे खत्म होते हैं, तो आपको उनको बचा के रखना है बैलेंस की बैंक की तरह, और वही आपके काम आएंगे, और वही सबसे बड़ा प्रिवेंशन है। Thank you, thank you. Rituji, would you like to add something in the plan of the social aspect of the elderly? वो कैसे अपनी life plan करें, let's say from the age of 50s and 60s, कि ऐसी problem ना हो, अगर हो भी तो उससे वो deal कर पाए. I'll take it forward from where Dr. Padma has said that the younger generation. So I will start that younger generation can also devote some time for their grandparents and parents. जो हम बात करें ना, उनको कुछ सिखा दें, नई चीजें सिखा दें, तो यहाँ वो अपना जो है, और it will also helping them the bringing the social network, जो उनकी loneliness थी वो कुछ हद तक खत्म हो जाए। So younger generation के लिए बहुत सारे यहाँ पे थोड़े से एम्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी हैं कि भाई आप अपनी स्लीप पैटर्न तो बढ़ा ही रहे हो, आप अपना जो स्लीप हाइजीन रख रहे हो, आप वो करते, बट ऑल्सो यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ हाउ यू इंटरेक्ट विद योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स। उनको कुछ कुछ नई चीजें सिखा सकते हैं, नई बातें सिखा सकते हैं। दिस इज वन थिंग। एंड फ्रॉम द 50s व्हेन वी स्टार्ट अर्ली, एवरी प्रिवेंशन हैज टू बी स्टार्ट अर्ली। तो आप 50s पे क्यों जा रहे हैं, 40s से स्टार्ट कीजिए। अभी तो इफ यू सी दैट every heart attack and everything is coming in the younger age of 30s year. So don't go and take time, okay I have a time, कि अभी तो मेरे पास बहुत टाइम है, अभी तो उम्र है, अभी तो like what we said कि अभी तो हम कमाने का टाइम है and we'll take care of ourselves later on. No, start early. अपने जो 40 से ही स्टार्ट कीजिए कि मैं जो प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स अभी डॉक्टर धमीजा एंड डॉक्टर पद्मा ने बताए हैं कि आप अपना स्लीप हाइजीन रखें, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, कुछ नई चीजों की तरफ ध्यान दें। आपके जो सोशल ग्रुप्स हैं, मे बी आपके जो सीनियर सिटीजन के, अब मैं अब ये अर्बन की बात कर रही हूँ, कि वहां पे जाएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। अगर ज्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट आप एक दूसरे की बातें सुनेंगे, समझेंगे, कुछ इंटरेक्शन होगा। और अगर रूरल में कहें तो वहां जैसे अपने लोग साथ में बैठते हैं, शाम को बैठते हैं, घूमने जाते हैं, आसपास मंदिर में जाते हैं, एटलीस्ट उसको कंटिन्यू रखें। सो अगर हम ये अपने थोड़े से चीजें जो हैं ध्यान में रखेंगे कि हमें काम करने के साथ साथ खुद की भी हेल्प करनी है, कि ताकि आगे जाके, जैसे डॉक्टर धर्मीजा ने कहा कि आप अपने ब्रेन सेल्स को बचा के रखिए, वो लिमिटेड ही है, वो आपके खत्म ना हो जाए। तो जैसे हम अपना बचत करते हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं, उसी तरह अपने अपने जो है ब्रेन सेल्स को बचाएं और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहें, किसी भी फॉर्म की। तो दिस इज माय ओनली सजेशन। एंड यंगर जनरेशन आपने थोड़ा बहुत ध्यान बहुत दें। अच्छा, बहुत अच्छा and बहुत सुंदर. Now I would request each of our esteemed faculty to give a small message to our audience in conclusion, and I'd like to start with you, Dr. Hamija. I think work-life balance is also important, and the sooner you start, the better you have the healthy life. Thank you. Thank you, sir. Very short and very meaningful. Padma ma'am, your message. Use it or lose it. That's really very crisp. And Dr. Devedi sir.
आपने जैसे डॉक्टर केसरी आपने कहा था बुद्धिज्म से एक कोट किया था, जी वैसे ही बुद्धिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है मध्यम मार्ग, मिडिल पाथ। जी एक्सट्रीम मत कीजिए, मिडिल पाथ पे रहिए, और प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। definitely. So there's one thing which is very important and I'm so surprised. And अभी हमने 100 के करीब प्रोग्राम किए हैं on different specialties, cardiology, on diabetes, on other lifestyle diseases, gastroenterology, neurology, oncology, and at the end of all the programs, एक बात जो हर प्रोग्राम में उसका जो कंक्लूजन और जेस्ट निकल के आता है वो है राइट डाइट। और हर बीमारी को रोकने के लिए उससे बचाव की डाइट एक ही है, हरी सब्जियां खाना, फल खाना, बेरीज खाना, कम तली हुई चीजें खाना, शुगर, नमक, इन सब चीज़ों का कम सेवन करना, एक्सरसाइज जैसे आपने बताया 150 minutes exercise per week, or sleep. So I think these three things are so important, and just maintaining this balance can prevent so many diseases that there's no reason why we should not be adhering to these. So सही खाना, सही सोना और सही व्यायाम बहुत सारी बीमारियों से हमें बचा सकता है। Now I would request Shri Anil Rajput ji to conclude and give a vote of thanks. Thank you very much, Dr. Kesri. You've given me onerous task to thank very esteemed panel. Words are never enough to thank these doctors who come and share their experience and make people aware of what they should do to prevent illness. And I'm grateful to them for coming and sharing their thoughts. And I'm sure every time they come, they kind of give us some new ideas, new thoughts. So first of all, I'd like to thank everybody from the core of my heart that you spend your time to come on our panel and share your experience with our participants. So really grateful to you for coming. Dr. Damija has given thoughts to people, and I'm sure all the listeners have already taken notes, because generally people have selective listening. They want to listen to what they want to listen. So whoever has a very important issue to address, they would have taken notes on what Dr. Damija had mentioned. He's talked about cutting down on salt, and have lots of fruits. At least 5 servings is what he mentioned. And I'm sure people who are listening, they would have taken note of it, and they will appropriately change their food habits. Sleep actually recharges your brain. That was another lesson he gave to the people who were here, and I'm sure it's kind of well taken by everybody. In fact, most of us, including me, I would say, we compromise on our sleep. We take sleep for granted. If we get less sleep, it's okay. We have late nights, get up early, it's okay, which actually is not. So I think people should take these suggestions very seriously, because as Dr. Padma very in the initial times only mentioned that it's what 40 to 60 is a time that we all say that it's a mid age, but you have many years to go even after 60 years. So if you have a very long life to have post 60, you have to take action early enough so that you don't have problems later on in your life. The message given by Dr. Damija, work-life balance, and sooner you start, better it is. I think it's well received by everybody.
Dr. Padma Srivastav gave many interesting issues and discourse on several things. But something that I took note of it is, when personality is changing, people have to be careful. Early diagnose is a personality change, and if food habits are changing, you have to be careful. Our comment on midlife, sleep hygiene, lifestyle issues are very important lessons to be taken. And learning is the best lesson that we all can have. It can keep your mind, brain active. If you use it, then you don't lose it. So that's the message. So I'm sure people have taken that. Dr. Shamsher Dwivedi gave multiple messages. I mean, every time I listen to him, I get awe of him. He very simply puts everything. How initially he responded to your question on radio transistor, and I'm sure everybody would have understood the whole dynamics of it. His comment on mind diet is very, very important, and people would have considered that. And what I like the most is that you go back, become 15-year-old person, start thinking young, and when you start thinking young, you pick up new habits, new instruments of music, new hobbies. All that actually can help your brain to start reworking. Something that you kind of take it into passive situation will become active. And as he mentioned, prevention is better than cure. And I think this is an old age saying, and I'm sure everybody would have considered this point. And it is getting reinforced by him. Ritu Rana, like always, made a very important and pertinent point that we need to do capacity building of caregivers. And I would urge ASSOCHAM team to think about a program on capacity building for caregiver, how we can do it, what we can do it. And I'm quite happy from this platform to work with HelpAge India. If we can create a capacity building program, corporate should come forward and spend money from their CSR spend, even if it is not from CSR. CSR is not allowed. I want to assure you that from my organization, we'll go as much as we can in working on capacity building program for the caregivers. With these words, I'd like to thank our panelists. Dr. Kesri, as always, has kept the entire session very engaging and very stimulating, and I'm sure people have benefited from all the questions and the answers given by the panelists. Thank you very much. Last but not least, thank you to ASSOCHAM team for organizing this. Many thanks. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.